feedback mechanism and homeostasis. We have two types of feedback mechanism, that is the positive feedback mechanism and the negative feedback mechanism. Common examples of positive feedback mechanism are fruit ripening, childbirth, blood clotting. Common examples of negative feedback mechanism, I will explain them to you people: temperature regulation, blood pressure regulation, osmoregulation. This is the negative feedback mechanism. ठीक है? So next, feedback mechanism occurs when outputs of the system are routed back as inputs as part of a chain of cause and effect. मैं explain करती हूँ. That forms a circuit or a loop. The system can be said to feedback into itself. The notion of cause and effect has to be handled carefully when applied to feedback systems. Simple casual reasoning about a feedback system is difficult because the first system influences the second and the second system influences the first. ठीक है, इनका एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, leading to a circular argument. This makes a reasoning based upon the cause and effect tricky, and it is necessary to analyze the system as a whole. ये किसका लिखा हुआ है? ये है कार्ल जोहान एस्ट्रॉम एंड रिचर्ड एम मरे, फीडबैक सिस्टम्स पे एन इंट्रोडक्शन फॉर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स में से ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है आप लोगों के लिए. अब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या. यहाँ पर बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फीडबैक मैकेनिज्म असल में है क्या चीज. I have already told you that we have feedback mechanisms present inside our body, and these feedback mechanisms, they are operating in the whole body, and our body needs to react on these feedback mechanism properly. ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टू टाइप्स के फीडबैक मैकेनिज्म हैं, एंड ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये क्या है, ये हमारे पास जो फीडबैक मैकेनिज्म है, दे आर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. They are the positive and the negative feedback mechanism. ठीक है, positive and negative. हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट होता है. ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट होता है तो ये इनपुट जो है ये पूरा एक मशीन के अंदर एंटर होता है. ये एक मशीन के अंदर एंटर होता है. एक इनपुट है हमारे पास, वो कुछ भी हो सकता है, वो इनपुट एक मशीन के अंदर चला गया. ठीक है, अब वो मशीन अगर तो बहुत ज्यादा तेज उसका काम हो गया तो इनपुट का मशीन के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? अच्छा इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ. सो दैट विल बी कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव इनपुट, मशीन की वजह से तेज काम करना शुरू होगी एंड इट वाज कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब इसी तरह हमारे पास एक और इनपुट है, हमने दोबारा से एक इनपुट डाला और उस इनपुट की वजह से क्या हुआ, हमने कहां पर डाला? इनसाइड द मशीन. एंड देन व्हाट हैपेंस? द मशीन इट स्टार्ट्स टू स्लो डाउन. द मशीन starts to slow down, and that slowdown, it means that the input had a negative effect on the machine working. Okay, so what type of feedback mechanism is this? This is a negative feedback mechanism because the input had slowed down the working of the machine. It had slowed down the working of the machine. So that is called the negative input. It is known as the negative feedback mechanism. समझे ना बात को बेटा? ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स हैं वो किस फीडबैक के ऊपर चल रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए. इज इट गोइंग टू वर्क ऑन द पॉजिटिव फीडबैक और इज इट गोइंग टू वर्क ऑन द नेगेटिव फीडबैक? मुझे जल्दी से आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ. हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं
वो मेनली आपको क्या लगता है, which feedback are they working on? Are they working on the positive feedback or are they working on the negative feedback? Yes. Any answers? Our body, the normal feedback that is operating inside our body, because of which our body systems are kept under a strict control, is the negative feedback mechanism. Okay, it is the negative feedback mechanism. The negative feedback is controlling the whole working of the body. It is controlling the whole working of the body. When things exceed in quantity, the body controls them. It reduces them. When things reduce in quantity, the body increases them. Our body is working on mainly on the pattern of negative feedback mechanism. And however, I have told you some examples. The positive feedback mechanism is observed only in some situations, not in normal situations. In our normal body situations, we are mainly dependent on the negative feedback mechanism. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. Let me go back to the board and let me give you an example, the explanation of the examples, and then we will call off the class today. ये देखिए. Positive, this was just an introduction to the feedback mechanism. We will study the detail of feedback mechanism tomorrow. Positive feedback mechanism, fruit ripening, childbirth, blood clotting. Fruit ripening, a different situation that takes place sometimes. Childbirth doesn't take place in everyone. It takes place only in those women that are bearing children. Okay, blood clotting, an abnormal situation. Now, these are some common examples of positive feedback mechanism. However, negative feedback mechanism, temperature regulation, very important. Blood pressure regulation, very important. Osmoregulation, very, very important. Blood sugar regulation, very important. Another example of negative feedback mechanism. ठीक है, तो ये हमारा आज का यहाँ तक ही हम रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है.